Good afternoon, everybody. My name is Bhuvan Arora. As already been told by Sonia about my background. So I am basically helping MSMEs to get their delayed payment. I am also working with the government and with public sector undertakings to recover their dues, to improve their business, to make certain changes in their business modalities as to how they can recover their dues in a quick manner. So let us start the presentation today. On the first slide, please. So the highlights of today's webinar will be the challenges faced by MSMEs while doing their business. So what are the challenges that MSME face when they are doing their business, which can affect their recovery? Second will be, because of the challenges, what are the solutions available to MSMEs? So as written over here, that we have two types of solutions. One is internal and one is external. What are the internal solutions that we can improvise within our organization? And what are the external solutions that even if after implementing the internal solutions, we are not able to recover our dues, how externally with the help of the court process, we can recover our dues in a quick manner. So in external solutions also, there are 5-6 laws where we can go, where we can approach the court or MSEFCs and we can get our payments. Third is newly introduced section 43BH of Income Tax Act. So what is this section? What does this section talks about? And what is the impact on the buyer of goods? We as seller of goods or rendering of services, we can give the services or produce the goods and sell it to the buyer. But what is the impact of this newly introduced section 43BH of the Income Tax Act? How government is helping us as MSME? Then last but not the least, the end of the webinar, I will share some quick tips as to how we can make certain changes, maybe in our invoices or in communicating with our buyer, so that the resolution of getting our delayed payment gets speedier. So let's start with the webinar. First is challenges. One of the major challenge in today's scenario is the delivery of material without purchase order. So many clients have approached me. They have said, sir, we have got the instructions over the phone, because our business is over the phone only. The buyer calls us, he places the purchase order, he places the that this much quantity and this much goods are required, rates are fixed over the call only, and we just deliver. So one of the major issues, major challenge is absence of any purchase order. Even if you go before any entity for recovery of your dues, say MSEFCs or court, they will insist on getting the purchase order, because that is the basis. Why I am more hampering on this question is purchase order will contain the quantity of goods, the rate at which both the parties have negotiated, the payment terms, which is the main thing. So everything will be contained in the purchase order. Next, competitive market leading to less margins. We are aware that we are not living nowadays in a monopoly or monopolistic market. Everywhere there is a competitive world. So if we are not able, and the buyers are very smart, if we are not able to give buyer a competitive price, he may shift to another competitor, he may purchase goods or get the services from other competitor. So because of the competitive market, our margins have squeezed. So that is also one of the challenge. Ineffective follow-up. I have personally seen that many clients, there has been ineffective follow-up. So the mode of their follow-up is basically over the phone. Sir, payment nahi aa raha, bahut time ho gaya, main kara deta hu, and the buyer will keep on giving reasons one after the another. But there is absence of any email, WhatsApp, or any communication in writing, say letter written to the buyer asking for follow-up. So that is absent, or that is missing. As a result of ineffective follow-up, we are in a situation wherein it is very difficult to get our payments, and the buyers, they keep on making one reason or the other.
Next. Yes, this is also one of the major issues. There are many transactions and many businesses which runs on cash. So we deliver the goods or render services, and what we get instead, there is no invoicing. What we get instead is cash transactions between one or the other party. So what happens at times, there are phases when the cash transactions are doing in an effective manner. But there are times that when we have delivered the goods which are not billed or invoices are not generated, and then it becomes very difficult to get our payments, in absence of which we cannot even move to the court, because there is no proof that we have actually delivered the good or rendered the services, because there is no invoice, there is no billing, nothing is there. Next. As a result of these above challenges, what happens is we have low business income despite decent amount of turnover. Why? Because a lot of our businesses are struck because of no payment from the buyer side, which end up in low profitability for our business. Next. Because of low profitability, we have liquidity crunch. So it's a vicious cycle. Next. Because of this, it affects our business growth. So once we are not able to, though we are doing a decent amount of turnover, but there is low business income. Because of low income, we will have low profitability. Because of low profitability, we will end up being in a liquidity crunch situation or financial crisis. Because of financial crisis, our business, in turn, it will impact. So what are the solutions to that? So there are two solutions, internal and external. Internal solutions are those which are available within the organization. So everybody of you have those solutions, but you might not be knowing about them. I will discuss and I will try to tell you about those solutions, which if implemented can make the recovery effective and reduce your bad debts. Others are external solutions. Apart from the internal solutions, those are existing within the company, there are external solutions which are alternate legal remedies that are available to an organization. Let us discuss about internal solutions first. Purchase order. As I rightly said in the challenges, the first point was absence of purchase orders. So one of the major internal solution is purchase orders are to be mandatory there. They have to be there. How? Either the buyer gives us the purchase order, or if the buyer is not giving the purchase order, just before delivering the goods, you can over the WhatsApp or email say that this much quantity and this much rate has been agreed between both of us. Kindly confirm so that I am dispatching the goods. Once he confirms, that is an acceptance on his part, on the part of the buyer, and that becomes a deemed purchase order. Next. Check on the payment terms. Okay, so once the purchase orders are issued by the buyer, there are payment terms written on it. Many companies, they insist on giving advance payment. Upon receipt of advance payment only, they render the goods or services. Other option may be upon delivery. In some purchase orders, it can be balanced within specified period. Say advance amount 10%, 50% upon delivery, and balance 40% upon maybe 10 days after delivery or 20 days after delivery. So that are the payment terms which we need to check. Then acknowledgement on the invoices billed to the buyer. What does that mean? Once we give the invoice, once we generate the invoice, we email it to the buyer or maybe over a WhatsApp. Try to get a acknowledgement that yes, this has been delivered. In case of e-way bills, generally the e-way bill is generated and the goods are delivered and at the buyer side. So that is also an acknowledgement. So if we have acknowledgement on the invoices, later the buyer cannot take a stand that no, this much amount or these goods were never ever delivered or they were faulty or any sort of such thing. He cannot make any statement. Regular follow-ups
So one thing which is missing is follow-up over phone calls. Everywhere in the business scenario, we usually follow up on the phone. But what is missing is now what we have to do as an internal solution to implement effective recovery is follow up on emails. If you don't have an email, no party in this world is not having a WhatsApp number. When they give the order over the WhatsApp or over the phone, follow up on the WhatsApp. Once you keep following up over the WhatsApp, any day they acknowledge, yes, we are facing some problem, because that is the practice of the buyers. They keep on giving one reason or the other in order to, just delay the payments. So whatever reasons they are giving, everything is getting recorded. So if we approach the court of law, it will be in our interest, and the court will exercise it, and it will take it in our favor that yes, efforts were made by the supplier and the buyer has actually made a default. Next. Obtaining balance confirmation from the debtors. So how we can obtain balance confirmation? Because follow-ups can be made. We can send ledger statement of the buyer over the emails or over the WhatsApp, and we can obtain balance confirmation. So one of the very unique way of obtaining balance confirmation is that my audit is going on. My auditor wants the outstanding balance to be confirmed by the debtor. So once that is confirmed, so it will amount to acknowledgement on the side of the buyer. Why I am saying so, I will tell at a later slide why this is very important. Next. External solutions. Now let us come to external solutions. Micro and Small Enterprises Facilitation Council. So basically, there are 5-6 ways by which even if we implement our internal solutions, then and the buyer are not giving the payment in due time, or maybe they have taken a lot of time, and ultimately we have to approach the court of law or adopt the process of law, then what methods are available or what remedies are available under the law to all the suppliers are these. So one of the remedy is approaching a Micro and Small Enterprises Facilitation Council under the MSMED Act. Second is recourse under the Insolvency and Bankruptcy Code. Third, check bounce case under section 138 of the Negotiable Instrument Act. As everybody is aware that when a buyer gives check and his check is bounced, so what remedies are available, not just under 138 of Negotiable Instrument Act, that is check has bounced, but in other acts also. Even if he has given the check, we can approach before different court of law and get the payment immediately. Next is arbitration between the parties. This clause is only applicable whenever there is an agreement between the parties and arbitration clause is there, that in case of any dispute between both the parties, the resolution will be in the form of arbitration appointed by both the parties, or you can approach the court also for appointment of an arbitrator. And once the arbitrator is appointed, he will adjudicate the case between both the parties and he will pass the relevant award, which can later be executed before the court of law. So let us discuss these external solutions one by one. Last is suit for recovery. We'll discuss as and when this comes. So first solution is reference to Micro and Small Enterprises Facilitation Councils. So this act, MSMED Act, Micro, Small, Medium Enterprises Development Act, this was established in 2006. The main purpose of this act was earlier MSEs, they were facing a lot of problems for getting their dues recovered. And there were no tribunals. MSEs are basically very small enterprises. So maybe the dues would be 5 lakh, 10 lakh, or 20 lakh, or 1 crore. So in order to, so they cannot approach, they cannot, do continuous litigation, incur expenses on the litigation also, and then recover the dues for say about 4 years, 5 years down the line. It will impact their business. So in order to curb that,
longer litigation process. These MSEFCs were established by the government. So what is section 15 of MSMED Act says? Where any supplier supplies any goods or render any service, the buyer shall have to make the payment on or before the date agreed, or within 45 days from the day of acceptance or day of deemed acceptance. So this means that whenever you as a supplier are supplying any goods or rendering any services, the buyer will either have to make the payment in terms of the agreement, which is maybe say 10 days, 15 days, 30 days, or if there is absence of any agreement, within 45 days. And even if the agreement says 60 days, in terms of this act, if you are filing a reference, the day will be counted as 45 days, because the act says 45 days and any agreement cannot override the law. So if he is not making so under section 15, he has to make payment within 45 days or the date agreed, which is less than 45 days. If he is not making the payment, then section 16 says, if the buyer fails to make payment within the stipulated time, as stated above, in terms of section 15, then the buyer shall be liable to pay compound interest, not just normal interest. It will be a compound interest with monthly rest to the supplier on the default amount at 3 times the bank rate as notified by the RBI. So RBI keeps on notifying the bank rate from time to time. If the buyer, section 16 says, if the buyer fails to make payment within the agreed time, which is less than 45 days or a maximum of 45 days, and the supplier has filed a reference under MSEFC, which is the Facilitation Council, then the buyer has to make payment along with the not just the principal amount, but compound interest at 3 times the bank rate from the date of default till the actual date of the realization of the dues. So that is section 16. Then next, section 18. 15 and 16. 15 says that payment will be made. 16 says interest clause. Then how a reference will be filed? It is filed under section 18. Any party to a dispute may make a reference to MSEFC, which will at first initiate conciliation between the parties. So conciliation is basically a formal kind of a meeting that a person will be there and both the parties will be invited. And if they are able to conciliate between them and able to arrive at a conclusion or amount which is agreed between both the parties and the buyer has actually paid that amount, then conciliation is effective. If the conciliation fails, then what happens? Then MSEFC shall either itself take up the matter for arbitration, or they shall refer it to any institution providing alternate dispute resolution services. Like in Delhi, we have DIAC, which is in Delhi High Court, Delhi International Arbitration Center. So that takes care of the arbitration between the parties. So we can approach the Delhi High Court. I'm just giving a rough example. In Delhi, if there is an arbitration between 2 parties in Delhi, so we can approach to the Delhi High Court and we can ask for appointment of an arbitrator. The Delhi High Court will appoint the arbitrator and it may refer to the matter to DIAC. And therein, the arbitrator will be there as a judge. He will ask both the parties to give their submissions and then he will pass an award. So that award can be later executed. Next. Yes. So few things to be noted here is that MSEFC to have the jurisdiction in terms of supplier's place of business, which is a very good advantage for all of us. We as a supplier, we need not have to go to the buyer's place. Suppose a supplier is in Delhi and the buyer is in Mumbai. So we cannot go to Mumbai tribunal or Mumbai MSEFC to file a case and keep on fighting over there, engage an advocate over there, maybe, take the flight tickets, because it will increase our litigation cost. So just to reduce the litigation cost, the MSEFCs are established and the jurisdiction aspect is the supplier's place of business, not buyer's place of business. So the buyer has to suffer because he has defaulted in making payment. Second is every reference shall be decided within a period of 90 days, which is normally not a case
because you know the court process. Everybody knows it, that a lot of time is passed in deciding a reference. So this is a very good tribunal or a very good facilitation council, but it takes a little more time than what is written in the act. So it is kind of a directory and not mandatory. Next solution would be Insolvency and Bankruptcy Code. Before 2016, the recoveries were taking a lot of time. After 2016, after the implementation and effectiveness of the Insolvency and Bankruptcy Code, this has become one of the quickest tool to recover your delayed payments from debtors. But I will give you a disclaimer on this. This is not a recovery mechanism. I will again say it is not a recovery mechanism. It is actually a double-edged sword. So what are the criteria? This is one of the quickest mechanisms. People have been filing cases under the Insolvency and Bankruptcy Code before the NCLT, which is the National Company Law Tribunal, based in almost every state of the country. And they have been recovering payments within less than, say, 3 months, some in 6 months, some in less than 1 year. And the debtors are coming upfront by making payment towards the supplier. But what is the criteria? The default has to be more than 1 crore. If the default is less than 1 crore, we as a supplier, we cannot approach this court. We'll have to take some other legal remedy, maybe MSEFC or the other remedies, which I will discuss further. Default has to be more than 1 crore. There has to be crystallized debt with no pre-existing dispute. So the default has to be 1 crore and it has to be a crystallized debt, means there is no dispute on that. Maybe you have supplied, there may be a situation that you have supplied goods or rendered the service for more than 5 crore or 10 crore. But those are in dispute. Maybe he has said that it's of substandard workmanship or poor workmanship or services or defects in goods. So then if in case of that, it will be termed as a pre-existing dispute, then this court will cease to take care or cease to adjudicate your case. We'll have to approach some other court. Then application can only be filed against a corporate. What does that mean? A corporate under the Companies Act means that a company, whether private or public or an LLP. So 3 categories have been defined as a corporate. One is the public limited entity company, one is private limited company, and one is the LLP. Only against these 3 entities you can come and approach before this court seeking recovery of your delayed payment. Fourth, the jurisdiction of NCLT. NCLT is the court, National Company Law Tribunal. So it is based on the registered office of the buyer. What is check bouncing? As you are aware that once the check is bounced, what remedy is there is that we can initiate criminal proceeding against the buyer who has given the check under section 138 of the Negotiable Instrument Act. What is to be noted herein is, what is the criteria? Check must bounce within the validity period. So there is a validity period. So every check has got a validity period of 3 months. If within that 3 months the check is bounced, then we can come and the court will entertain us under this act. And if the validity period has expired, then the check has become stale. And we must obtain a return memo from the bank. Once we present our check, and in case it is bounced, maybe because of insufficient reason, insufficient balance, or payment stopped by the drawer, or any other reason, then we have to obtain a return memo from the bank, which in bank usually gives on the date the check is bounced. So that we have to obtain. And what is the jurisdiction of the court? It is based on seller's bank. Wherever our bank account is there, in that jurisdiction, we can file the case before the appropriate court. Next is arbitration proceeding. Without going into court of law, if we want to appoint an arbitrator,
how can, and we want to get that arbitrator to adjudicate the case, how that can be done. It can only be initiated if there is a written agreement, A, and that written agreement provides for arbitration clause. So if there is a agreement in which it is written that in case of dispute between the parties, the matter will be referred to an arbitrator who will adjudicate the case. So in that situation, whenever there is a arbitration clause in writing in an agreement, we can approach the arbitrator. And if the option is that either both the parties appoint the arbitrator, or we can also approach the court for appointment of an arbitrator. What is the criteria? Jurisdiction of arbitrator is based on the place as referred to in the agreement. So there will be a jurisdiction of appointment of the arbitrator, which will be written in the agreement itself, that if both the parties are from Delhi, they may write that the jurisdiction of the arbitrator to adjudicate the case will be in the Delhi, or they may point out a place. If suppose buyer is in Delhi and supplier is in Mumbai, they may either point out a place of arbitration in Delhi or Mumbai, or they may also, because it's a written agreement between both the parties and they are agreeing and signing on it, they may appoint a third place of arbitration also, say in Hyderabad. Whatever suits and whatever is comfortable between both the parties, because the agreement is made in writing. So once they adjudicate and once they agree on the place of arbitration, then they have to abide by that. Other modes. So last mode of recovering our delayed payment through external mechanism is civil suit for recovery, which are the normal suit. Suppose if the buyer is not making payment and there is no check given by that party, the amount is less than 1 crore, so we cannot even approach the insolvency and bankruptcy court, and we are a medium enterprise, because MSEFC are micro small enterprise facilitation council. So for medium enterprise, that MSEFC is not applicable. So what to do? We'll have no option but to go to a district court for filing a recovery suit. The next option is summary suit. Summary suit is in a way a recovery suit only, but the time period for recovering the payment is very less. It is a quicker way to get your payment. That's a summary suit. What is the criteria? Jurisdiction of a court is based on the principal place of business, that is registered office of the defendant, that means of the buyer, or on a cause of action arising wholly or partly. So suppose, I'll give you an example. The buyer is from Delhi and the supplier is from Mumbai. So if there is a civil suit to be filed by the supplier, he has to file under option 1. He has to file before the district court of Delhi, because the buyer's principal place of business or the registered office of the buyer is in Delhi. Or if he has supplied under second option, cause of action arising wholly or partly, if he has supplied the material goods from his place, which is in Mumbai, and has received the payment in the bank account, but he has supplied the goods in Delhi but from Mumbai, in that case also cause of action has arisen in Mumbai also, because he has supplied the materials, manufactured the material and supplied it from Mumbai. So he can file a case in Mumbai also. Then this is a newly inserted section 43BH of Income Tax Act, and there is a new 45-day payment rule. As it is already there in the act that even if there is an agreement between the buyer and the seller, then whether that agreement, the payment terms are encapsulated before 45 days, then the buyer has to make payment before 45 days or a maximum of 45 days. But in this section, the income tax, the government of India, by way of amending the income tax, has also tried to help the MSMEs. How? Let's see. An SSC is only eligible to take benefit of the amount actually paid to an MSME entity within 45 days and then claim deduction on it as an expense. So if during a financial year, there is a receipt of the goods from the supplier
And if within 45 days, and that supplier is an MSME, I will tell you how you can tell the buyer without even saying it that I am MSME. I will give at under the tips, quick tips, I will tell you how. So if within 45 days of the receipt of the goods, the payment has not been made, the buyer will not be able to claim that payment as a deduction under the income tax. So that is the 43BH of the income tax. What is the applicability? It has already come into existence with effect from 1st April 2024. And what are the repercussions on the buyer? Buyer cannot claim deduction during the said period from the income if the amount is not paid to the MSME within the time frame. So he'll have to end up paying the higher tax because the payment already made will not be claimed as a deduction. So the income will increase, he will end up paying the higher tax to the income tax department. Next. Now let's see some of the quick tips for speedy resolution. One is mention your URN on all the invoices. UDYAM registration number. Mention everywhere. On the top of it, where you write your GST number, just below that, mention URN number. By way of that URN number, the buyer cannot say that I was not informed that you are an MSME, because that is the usual stand that the buyers take before the court. That I did not know. Had you informed me that you are an MSME entity, I would have paid within the 45 days period. So once you write that URN number on the top of the invoice, buyer cannot have any excuse but to make payment. Also specify the payment terms on the invoices or emails or quotations. So in the invoice, at the end of the bottom of the invoice, there is a column usually which people write terms and conditions. So under that terms and condition, one of the terms and condition, in absence of any purchase order, or make it a habit that it is written everywhere, even if there is a purchase order, that you must include payment terms. What payment terms? That depends upon person to person, business to business, entity to entity. You may write that goods one delivered will be, or the payment of the goods delivered will be made within a period of 10 days from the date of invoice, or 15 days or 45 days. It depends upon business to business. So that must be written in the invoice. Next. Yes. One of the reasons to escape from buyer's defect clause is you must include goods defect clause under the terms and condition of the invoice. How you can include that? Goods once delivered cannot be returned back, and in case of any defect, kindly notify within 10 days of the delivery of the goods, after which goods will be deemed to have been accepted by you. If you write such clause, I am telling you, buyers will not be able to take this stand, because once the invoices have been delivered, the goods have been delivered, after 2 years you are fighting for your payment, then you approach the court, they come and say to the court that the goods were of defective quality. So to the court you can tell that from my invoice it is clearly written that once the goods are delivered, any defect or anything has to be notified within 10 days or 25 days or 30 days of the receipt. After that, it will be deemed as an acceptance of the goods, and no defect or anything can be entertained. Next is the interest clause in case of delayed payment. Again, under the terms and conditions of your invoice, you must include interest clause, that if the payment is not, the payment terms is already included, and you can refer that if the payment is not made within a period of 10 days or X number of days, then interest at 18% or 24% or whatever shall be chargeable for the default amount. So what happens in those cases, that in case you are sending them a demand notice through a lawyer, and a lawyer includes the interest clause, and later on they deny, and the case is filed before the court, they usually take a stand that interest was never agreed between the parties. So we can give the reply to the court. We can tell the court that A, it was already written in our invoices. B,
they never ever disputed the same before the court, or even till date they have never disputed. Only to avoid the payment of interest and our principal dues, they are disputing the interest today itself. So that will take care of our interest aspect also. Hope I have covered all the major issues, whatever the challenges are being faced and whatever solutions are there. I have kept this presentation very crisp and short, and I have given more time for question and answers to be asked, so that because many people are there, a lot of questions would be there, because you are the actual businessman who are running and dealing with day-to-day challenges. So I would be more happy to answer question answer round. I think let us open the question answer round for them. Thank you so much, Bhuvanji. So I request all my participants who would like to ask, this is your time now. You can write down your questions in chat box also. But I also see a few people have raised their hands, so I'm going to start with them. Okay, this is Mr. Vivek. Vivekji, please ask your question. Can you unmute Vivekji? Is there anyone else who would like to ask? Yes, Mrs. Singh. Very good evening. Please ask your question. Yes, hello, can you hear? Sir, your voice is very low. If you can come near the connection. Yes, hello. Can you hear now? No, sir. Your voice is very bleak. We won't be able to hear you. Okay, I'll just type the question. Since the voice is very low, you can write down in the chat section and we'll answer you. Abhimanyu ji? Yeah, sure. I'm Okay. writing in chat section. Okay, no issue. So who do we have next? Dhirendra ji, would you like to ask now? Mr. Ritesh Sharma, please ask your question. Hello. Dhirendra ji, yes, good evening. Please ask your question. Good evening. हेलो, आप सुन पा रही हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है। हेलो रतेश जी, आप एक बार रुकिए, धीरेन्द्र जी के बाद आपको देंगे। अभी लेट धीरेन्द्र जी आस्क प्लीज। धीरेन्द्र जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हाँ सोनिया जी, मेरा क्वेश्चन ये है। हेलो हाँ जी, बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज कोई सप्लायर कोई भी गुड्स विदाउट परचेस ऑर्डर कोई गुड सप्लाई करता है, तो उस केस में पेमेंट्स में जो दिक्कतें आ रही है उसको कैसे हैंडल किया जाए? ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जनरली आजकल ऐसे ही बिजनेसेस चल रहे हैं दैट विदाउट परचेज ऑर्डर ओवर अ कॉल और मे बी बिकॉज ऑफ गुड टर्म्स विद द सप्लायर और विद द बायर, तो हम लोग एंटरटेन कर लेते हैं और बाद में यही प्रॉब्लम्स आती हैं हर बिजनेस को, हर एमएसएमई एंटिटी को, कि बिना परचेज ऑर्डर के हमें रिकवरी करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। बिकॉज जब हम कोर्ट के पास जाते हैं तो वो कहते हैं आपके बीच में ट्रांजैक्शंस क्या एंटर हुई थी, मे बी आपके बीच में जो अमाउंट है वो तय ही ना हुआ हो। आप कह रहे हैं कि मेरे को 250 रुपीज पर केजी के हिसाब से कुछ क्वांटिटी सप्लाई हुई है, वो कहेगा इतना हुआ ही नहीं था, हमने तो 100 रुपीज पर केजी बोला था। बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं इस केस में। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, जो आपने इनवॉइसेस भेजे हुए हैं उसमें आपने जो रेट एग्री करके भेजा हुआ इनवॉइसेस, उस बेसिस पे अगर आप उनकी कंफर्मेशन ले पाए, पार्टी अपना लेजर बना के उनको भेज पाए और उनसे रिकंसाइल करने के लिए बोले, और अगर वो रिकंसाइल हो जाता है तो दैट आल्सो अमाउंट्स टू एक्नॉलेजमेंट। उस बेसिस पे हम कोर्ट ऑफ लॉ के पास अप्रोच कर सकते हैं। अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं? ऑप्शंस है, यही बताए ना आपको। जैसे कि मेरे कहने में जब आप अगर आपके पास परचेज ऑर्डर नहीं भी है तो सबसे पहला ऑप्शन यही है आपके पास कि आप उस पार्टी से कुछ एक्नॉलेजमेंट लें। अगर वो पार्टी बहुत स्मार्ट है
अगर वो बायर बहुत स्मार्ट है, उसको पता है कि एक्नॉलेजमेंट आप किस पर्पस के लिए ले रहे हैं, तब भी आप जी। कोर्ट ऑफ लॉ जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर परचेज ऑर्डर नहीं है तो आपकी रिकवरी नहीं हो पाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं तो तो तब भी आप मेरे कोर्ट ऑफ लॉ जा सकते हैं। आपका ग्राउंड, सपोज आपके पास 5 ग्राउंड्स थे, अब आपके पास 4 ग्राउंड्स रहेंगे, दैट्स इट। और कोर्ट भी अंडरस्टैंड करता है कि बिना परचेज ऑर्डर के भी काफी चीजें चल रही हैं, क्योंकि जी। उनके पास भी रोज के ऐसे ही केसेस आते हैं कोर्ट के पास। ओके। मेरे पास एविडेंस के तौर पे अभी जैसे मेरे पास, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास डिलीवरी चालान है, ठीक है, जो हमने बायर को दिया था, ओके वो रिसीव कॉपी है। और सेकंड, एक मैंने जो डिलीवरी चालान 2 कॉपी होता है, एक हम लोग रिसीविंग लेते हैं और एक बायर को देते हैं। तो बायर के पास जो कॉपी था, उस कॉपी पे बायर के जो इंचार्ज थे उस प्रोजेक्ट के, उसके काफी सारे टीम मेंबर्स ने उस मटेरियल को सर्टिफाई किया है सिग्नेचर के साथ। राइट। ओके, वो एक कॉपी है मेरे पास। और लास्ट एक कॉपी इनवॉइस हुआ, जो कि मैंने जीएसटी रिटर्न में अभी तक नहीं लगाया है वो इनवॉइस को, क्योंकि मुझे उसके अगेंस्ट में फिर जीएसटी भी पे करना पड़ता है। राइट। तो मैंने उस इनवॉइस को जीएसटी रिटर्न में फाइल नहीं किया है। तो आपने परचेज, आपने उसमें उनको परफॉर्मा इनवॉइस रेज किया था? इनवॉइस तो आपने नहीं दिया क्योंकि आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। पीआई आपने भेजा था उन्हें? पीआई भी नहीं भेजा था सर, मैंने जस्ट पीआई डिलीवरी चार्ज उनको दिया है। तो आपने देखिए, अब आपने गुड्स तो डिलीवर कर दिए, ये तो प्रूव हो गया, क्योंकि आपके पास एक्नॉलेजमेंट भी आ गया कि आपने गुड्स डिलीवर कर दिए। बट जब तक आप, अगर आप आज की डेट में हम कोर्ट जाते हैं, जी। ठीक है, तो कोर्ट जी। हमसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो आपने गुड्स डिलीवर करे हैं उसका इनवॉइस क्या है। तो अगर हमने पीआई भी रेज किया होगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ पीआई वी कैन टेल दी कोर्ट कि इतने पैसे हमने लेने हैं उस पार्टी से। तो आप नहीं, एटलीस्ट इसमें एक काम कीजिए, आप उसमें पीआई रेज कर दीजिए, और जो एक्नॉलेजमेंट उन्होंने ऑलरेडी आपको गुड्स का दे रखा है, जो आपने डिलीवर कर दिया है, जी। वो इटसेल्फ इज एन एक्नॉलेजमेंट कि उन्होंने गुड्स लिए हैं and they are bound to pay you the amount for the goods received by them. ओके। और सेकंड चीज क्या था, मेरे पास मैंने उनको इनवॉइस भी जनरेट किया है, वो इनवॉइस का रिसीविंग भी उन्होंने दिया है मुझे। तो मेरे पास एविडेंस के तौर पे अभी यही है, तो इन तीनों डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ में मैं केस फाइल कर सकता हूँ। एक्टली आप कर सकते हैं। 2 डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, एक इनवॉइसेस हैं और एक जो गुड्स डिलीवर हुए हैं उस पे आपने जो बिल होता है आपका, उस पे उनकी एक्नॉलेजमेंट है। सो ऑन दोस 2 बेसिस यू कैन डेफिनेटली फाइल द केस। और आपके पास बहुत बहुत सही वो है, सबूत है, आप जा सकते हैं कोर्ट के पास और कोर्ट विल लिसन टू यू। नहीं, और एक डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि जो डिलीवरी चालान का जो कॉपी बायर के पास था, उस कॉपी पे जो बायर है उनका पूरा टीम उस मटेरियल को सर्टिफाई किया है, हाँ ये मटेरियल आया है, इतना हमने यूज किया है, इतना बैलेंस पड़ा हुआ है हमारे पास, और सभी लोगों का सिग्नेचर भी है उस पे। ठीक है, ठीक है। तो दैट इटसेल्फ इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑन देयर पार्ट कि हाँ गुड्स हमने रिसीव कर लिए हैं, बट और नाउ कितनी क्वांटिटी के गुड्स आए हैं, और ये सर्टिफाई करके हम दे रहे हैं कि ये गुड्स अप टू दी स्पेसिफिकेशंस जो हमने मांगी थी वो सप्लायर ने हमें दी है। तो लेटर ऑन जब कोर्ट जाएंगे हम, तो वो ये नहीं कह सकता कि इनके गुड्स में कुछ प्रॉब्लम थी। नहीं, इस कंपनी के साथ मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ, उनको रेगुलर सपोर्ट कर रहा हूँ। धीरेन्द्र जी, वी हैव अदर पीपल आल्सो वेटिंग। अभी आपको ना वेबिनार के बाद हम दोबारा कांटेक्ट करवा देंगे भुवन जी से, तो जो आपका क्वेरी रह गया है आप तब डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है? अब वी कैन कट शॉर्ट, आप जा सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, और आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे तो आपको डेफिनेटली आपकी पेमेंट मिल जाएगी। Kindly, I need your help. Okay, after webinar, I can contact you. You Yes, can please. contact Just them. write interested in the chat section. We'll have my team member to get in touch with you. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, Dhirendra ji. Thank you so much. So we have next Mrs. Singh or Ritesh Sharma ji. You were there in queue that time. Would you like to ask your question now? Manpreet ji, can you unmute Manpreet ji and Mayank ji? Vivek ji, good evening. Would you like to ask your question? Yes, Mrs. Singh, would you like to ask your question? Hello.
Yes, Sir, can we have Vivek ji first and then we'll have Abhimanyu ji? Abhimanyu ji, please, you can mute right now. So let Vivek ji ask. हेलो सर, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई है फेसिंग अ इशू कि ये जो सेक्शन है जो इनकम टैक्स में ऐड किया गया है, क्योंकि हम टैक्स ऑडिट डालते हैं तो वहाँ पे ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स किस पे ये सेक्शन अप्लीकेबल है, वो हम लोग को बहुत ज्यादा इशू आ रही है। मतलब एक ट्रेडर्स अगर दूसरे ट्रेडर्स को देता है या ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर को होता है, या इसके क्या क्लॉजेस में क्या इसमें, जिसे हम, क्योंकि जब हम सप्लाई पार्टी सप्लाई करती है तो उद्यम तो आता है बट वो मैन्युफैक्चरर है, कभी चेंज कर लेता है वो ट्रेडर्स में, कभी वो किसी में चेंज हो जाते हैं। तो इस केस में सेक्शन कैसे अप्लीकेबल होगा ये, और किस पे अप्लीकेबल है ये? सर ये इस पे क्लैरिफिकेशन आई है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये ट्रेडर्स पे एप्लीकेबल नहीं है, ट्रेडर्स पे क्लियर। ये सब्सिक्वेंटली क्लैरिफिकेशन आया कि वेदर इट इज एप्लीकेबल ऑन दी ट्रेडर्स आल्सो, तो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि ये ट्रेडर्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स पे ही होगा एप्लीकेबल। तो जो जॉब नोटिफिकेशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप चैट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। आई विल टेल समबडी टू हेल्प यू आउट इन प्रोवाइडिंग दैट नोटिफिकेशन। तो ये सर इसमें जॉब वर्क भी कवर होंगे, जो जॉब वर्क करते हैं वो भी कवर हो जाते हैं, या फिर ये जॉब वर्क नहीं कवर होते हैं? ये एक बार या तो आप अपनी क्वेरी मेरे को बता दीजिएगा, मैं एक बार उसको एनालिसिस करके फिर आपको एग्जैक्टली बता पाऊंगा विद दी रेलेवेंट सेक्शन एंड दी नोटिफिकेशन। जो आपकी क्वेरी आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको उसमें क्लैरिटी दे दूंगा, जो भी क्लैरिटी है उसमें। ठीक है सर। आप इंटरेस्टेड लिख देंगे तो हमारी टीम से आपको कोई भुवन जी से संपर्क करा देगा। लाइक अवेलेबिलिटी जैसे भी होगी भुवन जी की, या वेबिनार के बाद या कल परसों आपसे बात करवा देंगे। ठीक है विवेक जी, तब आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके मिसेस सिंह, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन नाउ। Good evening, Mr. Singh. Please ask your question. Mayam ji, good evening. Please ask your question. Good evening, ma'am. Is my voice audible? Yes, you are audible. Yeah, we are working as a PSU contractor. Since 75, we have the registered company, and I have a dues against HPCL, name Hindustan Petroleum Corporation Limited. Right. And there is 2-3 issues, sir. In short, I can explain you. HPCL PO issue करता है परचेज ऑर्डर टेंडर करने के बाद में, एंड देन ही द थिंग्स एग्जीक्यूटेड थ्रू हिज कॉन्ट्रैक्टर्स। और उसमें जो जिस भी आउटलेट पे, मतलब जिस भी पेट्रोल पंप पे हम लोग काम करते हैं, सो वो बेसिकली वहां का डीलर एक कंप्लीशन रिपोर्ट हमको प्रोवाइड करता है। राइट, यू आर सबकॉन्ट्रैक्टर्स? No, I am the main contractor. Main contractor, okay. Yeah. एंड उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम जो रेट्स फिक्स हो जाते हैं टेंडर में, उससे हम बिल रेज करते हैं आउटलेट वाइज। ठीक है। बट सिंस लास्ट ऑलमोस्ट फ्रॉम 2019, पीसीएल ने समवेयर राउंड अबाउट रफली 1.98 CR का अमाउंट मेरा होल्ड करके रखा हुआ है। दे आर नॉट इवन प्रोवाइडिंग द रीजन, नॉट इवन प्रोवाइडिंग द जस्टिफिकेशंस कि क्यों होल्ड किया है, कुछ भी नहीं। जबकि उनके इंजीनियर के सर्टिफाइड बिल्स हैं, इवन दो दे आर डिनाइंग टू पे। एंड जस्ट देयर इज अ कंडीशन फ्रॉम देम कि अभी आप आधा पैसा ले लो, आधा फिर आगे देखते हैं। सो वी आर नॉट रेडी फॉर। उन्होंने पार्डन सर, हैव दे गिवन इट टू यू इन राइटिंग कि हाफ अमाउंट अभी ले लो, हाफ बाद में दे देंगे? हाँ, बेसिकली जब हम लोग रफ बिल सबमिट करते हैं उनके पास में, दैट टाइम दे यूज्ड टू इशू द कॉल अप सिस्टम कि पर्टिकुलर एज पर आपको ये एक वर्केबल, मतलब मेन पीओ के अगेंस्ट में वो पर्टिकुलर आउटलेट का एक वर्केबल पीओ इशू करते हैं, जिसको ये लोग कॉल अप बोलते हैं। उसके अंदर वो क्वांटिटीज मेंशन करते हैं। सो इन्होंने ये पहले काम करा लेते हैं और उसके बाद में फिर हाफ क्वांटिटी का वर्केबल पीओ कॉल अप इशू कर रहे हैं, एंड बोले आप अभी इसको ये डाल दो, उसके बाद में आप देखो, हम बाद में देखते हैं। इवन दे नॉट रेडी टू अपॉइंट द आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेशन क्लॉज है जिसके अंदर की क्लियर लिखा हुआ है सर
वी आर कंटिन्यूसली, मैं उनको आज तक सिंस 1.5 साल में ऑलमोस्ट 200-250 मेल कर चुका हूँ टिल द चेयरमैन। आर्बिट्रेशन क्लॉज के अंदर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि ओनली द फंक्शनल डायरेक्टर्स हैज द ऑथोरिटी टू अपॉइंट द आर्बिट्रेटर इन एनी केस, बट दे आर नॉट इवन रेडी फॉर दैट। उनका कहना है कि हमारा कोई भी एक जीएम या सीजीएम अपॉइंट कर दे। आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। दूसरा कंडीशन मेरा ये है कि इन्होंने 20 लाख का एक काम मेरे से करवा लिया, अपार्ट फ्रॉम दैट उसका कोई टेंडर नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, एंड दैट डीलर हैज प्रोवाइडेड मी द कंप्लीशन सर्टिफिकेट। सो आपके पास बिल रेस करने के लिए भी रेट्स नहीं है सर, बिकॉज पीओ इज नॉट देयर, नो टेंडर इज देयर, पीओ नहीं है। एंड माय थर्ड कंडीशन इज, इन्होंने एक पर्टिकुलर टेंडर किया ड्यू टू द करप्शन इन द डिपार्टमेंट। ऑफिसर ने मेरा टेंडर होने के बाद में उसको पीओ में कन्वर्ट नहीं किया, एंड ही यूज्ड फॉर द अदर कॉन्ट्रैक्टर एंड इशू द न्यू टेंडर फॉर द सेम वर्क। उन्होंने टेंडर इशू किया, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से काम करा लिया, और आज मेरा 78 लाख रुपीस का बिल होल्ड करके रखा है सिंस ईयर 2020। एंड जब मैंने उनसे ये किया तो उन्होंने 2024 के अंदर मेरे को 2020 का पीओ इशू करके दे दिया कि आप इससे हमको वो कर दो। सो आई एम नॉट रेडी फॉर द ओल्ड रेट्स नाउ बेसिकली। सो ये छोटी छोटी कंडीशंस है सर मेरी, एंड सिंस लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 years आई एम एक्चुअली इन ट्रबल फाइनेंशियल क्रंच सर, एंड आई एम एमएसपी रजिस्टर्ड। ओके। तो जैसे आपने बताया कि सिंस 2019 you have been facing these problems with HPCL, right? Yes sir. Yes sir. What were you doing? So the main question is, what were you doing for these last 6 years? सर बेसिकली जस्ट कम्युनिकेटिंग विद देम ये है। दूसरा, जब इनके यहाँ पे एक छोटा सा पैटर्न होता है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, इनका एक छोटा सा पैटर्न होता है कि एवरी 3 years ऑफिसर्स कंपनी चेंज द ऑफिसर्स एट द लोकेशंस, ट्रांसफर्स होते हैं इनके। सो पहले जो ऑफिसर थे, हाँ हम देखते हैं, हम ये करते हैं, दे आर जस्ट फूलिंग, जस्ट बाइंग द टाइम ऑन दिस। Got it. लास्ट क्वेश्चन इज, क्या इन्होंने कभी डिस्प्यूट क्रिएट किया आपके साथ ईमेल्स पे? नहीं, ईमेल्स पे कभी डिस्प्यूट क्रिएट नहीं किया। एवरी टाइम दे यूज्ड टू कॉल मी कि जस्ट कम ओवर टू आवर ऑफिस, विल सॉर्ट इट आउट एम्बिकली, विल गेट इट रिजॉल्व, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। फिर उसके बाद में एक कंडीशन इन्होंने फॉर टेस्टिंग, क्योंकि सर ऑनेस्टली आई एम फ्रॉम इंदौर, सो इंदौर में आज की तारीख में नो लॉयर नथिंग, किसी को भी आइडिया ही नहीं है एमएसएमई। आज तक जितना भी किया सब मैंने अपने ऑन माय ओन में रिसर्च कर करके करता रहा इस चीज को, किसी को कोई आइडिया नहीं था। मैंने एक सिंपल सा सर्टिफाइड बिल मैंने एमएसएमई पे कंप्लेंट रजिस्टर किया, देन उसके अंदर उन्होंने जो रिप्लाई फाइल किया इन्होंने एचपीसीएल ने कि कॉन्ट्रैक्टर लेट बिल सबमिट कर रहा है, सो वी आर आस्किंग हिम कि जस्ट विदाउट जीएसटी हम पेमेंट कर देते। इट मींस दे आर डायरेक्टली आस्क मी टू इवेडिंग द टैक्स। राइट। सो उसके बाद में फिर what can be done? I have understood your case more or less. What Sir. can be done is, I have already told you कि we can go before the insolvency and bankruptcy court. Sir. Approach NCLT in filing the case, because actually उन्होंने default किया है on your dues. Actually sir. तो जब default के केस में, और केस 1.1 crore से ज्यादा है, 1.98 crores है. Yes, Second condition under the insolvency was the crystallized debt has to be there, which they have accepted it. Yes They sir. are only saying ना that we will not pay for Yes. making one reason or the other, but उन्होंने dispute तो नहीं किया। नहीं, डिस्प्यूट ना उन्होंने आज तक कोई भी ये चीज नहीं दिया कि यू आर सप्लाइड द सबस्टैंडर्ड, ना उन्होंने एक भी टेंडर का क्लॉज एग्जीक्यूट नहीं किया, नथिंग, नॉट इवन डूइंग। Best way Sir. which can be opted in your case to approach the NCLT under the provisions of insolvency and bankruptcy code, and Okay, get your payment in less than one year. I would say maybe 6 months or maybe Sir. less than that, because HPCL is a renowned company, it's a government Yes. company. So yes sir, yes कोई you, भी ऐसा नहीं करेगा कि that company goes into insolvency. We are very limited players in the petroleum industries. yes sir, So nobody would want that, that company goes into bankruptcy. sir. So that is the best case. Okay sir. So should I approach directly to the NCLT?
You approach, you consult with our team, Okay, sir. UDYAMITA Helpline. They will Okay. help you guide the way as to how you can approach, what documents will be required, and what is the best procedure and the timelines that can be met, all those things. Yeah, Right? sir. Thank you, sir. Sir, actually, I also want someone to guide me. मैं किसी से consult कर सकूं because कर there is लेंगे. no one in In- Indore कि कोई I किसी को आती I नहीं will है tell you, MSME. in Indore, few cases of mine have been going on. So Okay. I have been doing it from the, from here only, because अभी क्या चल रहा है, virtual hearing के through court cases चल रहे हैं. NCLT Indore, I am appearing before them, but मैं Okay. virtual hearing के through ही कर रहा हूँ, because कोई effective lawyer वहाँ पे है नहीं. Yes, actually, sir. जो भी जिससे भी बात करो, अरे MSME क्या होता है? Everyone is just what is MSME? पहले तो यही पूछ रहा है सर सामने वाला. Don't worry, ठीक है. Mayank ji. ठीक है. We'll get you Okay. connected through Bhuvan ji. Okay, just wait Yes. for our team member to get you in touch with Bhuvan ji, maybe after the webinar only. Okay, Thank Mayank you. ji. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you, sir. Mr. Singh, please ask your question, Abhimanyu ji. हाँ जी, मैडम। Yes, sir. Can you hear? Yes, yes. अच्छा, ऐसा है, we have a purchase order from a company which worth about. Hello. Abhimanyu ji, पूछिए अपना question. हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, you see, we have a purchase order from a company worth about 90 lakhs, in which the payment terms were 20% advance and 70% was against performance wise before dispatch, but Okay. after inspection of the equipment. So we received the advance, we manufactured the equipment we offered for inspection and dispatch. Equipment has been inspected, but the party is not lifting the equipment and not paying. Okay. Okay. So there is a particular clause in the law which talks about specific performance of the contract. If there is a contract, Yes. and in terms of that contract, you have already manufactured the goods and the party is not lifting the goods, you can approach the court under the specific performance of the contract, that this was the contract, these were the terms, that they will lift the material once the inspection is done, and after that they are not lifting the goods. So either they make the payment of the total goods because they are lying in my warehouse, I am paying the warehouse charges also, I am, the goods are being deteriorated because day and night they are being there without any use. So you can approach the court for under specific performance of the contract, and court will immediately give them directions to lift the material or to pay the whole amount, including after lifting the material, whatever amount becomes due. So in this, can we will MSME Facilitation Council can also take up this case? MSC FCs might not be in a position to take up the case because it's a specific performance of the contract. They come in picture when you have supplied the goods and the buyer is not making payment. Yeah. So this is one stage earlier than that. Yeah. Right? Yeah. Okay. You can write a detailed note to UDYAMITA Helpline, and they can get in touch, with the appropriate course of action. And I can also assist them as to how your case can be resolved. Now, where is your office? Where are you based? I am based out of Delhi. You're in Delhi. Okay, fine. Yeah. You're in also Delhi. I have two offices, one in Delhi and one in Noida. Okay, we are in also Delhi and Noida. Okay. Yeah. Okay, we will be in touch. Yeah. We'll be in touch with you, sir. Okay. Okay. Thank you, Mr. Singh. So we have now Himani Sagar. Would you like to ask your question? Hi, good evening. Please ask your question. मैम एक्चुअली हम लोगों का ना पेमेंट्स है जो कि अबव 1 करोड़ है. ओके, तो मैम बट हम लोगों का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से डील होता है, और मैम गवर्नमेंट एक्चुअली वो 1 ईयर या फिर अप्रॉक्स 2 इयर्स वो लोग इतना भी टाइम ले लेते हैं और फिर भी पेमेंट नहीं आता है. तो उस केस में सर क्या सॉल्यूशन है? और सारी पेमेंट्स अबव 1 CR है, ऐसा नहीं है कि कुछ छोटा है या फिर मतलब छोटा मोटा पेमेंट्स तो ठीक है, पर अबव 1 CR का पेमेंट्स तक नहीं आता है. कौन से डिपार्टमेंट से है, मतलब वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या PSU है?
सर हमारा पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, लिमिटेड नहीं है। और जो भी डील होता है गवर्नमेंट से आपने लेना है? सर बेसिकली एफएसएससीआई से हम लोग डीलिंग करते हैं, जितने Okay. भी ये एफएसएससीआई से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स है ना, जितने भी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो गए, फूड Okay. सेफ्टी डिपार्टमेंट्स हो गए, Okay. इन सब से हम लोगों का कंसर्न रहता है। Okay. जी तो इसमें जो आपने गुड्स, यू हैव सप्लाइड द गुड्स और यू हैव रेंडर्ड द सर्विस? सर वी हैव रेंडर्ड दी सर्विसेज एक्चुअली। हम माइक्रोबायोलॉजी लैब्स बनाते हैं। Okay. प्लस Okay. एफएसडब्ल्यू जो व्हीकल्स होता है ना, फूड Right. सेफ्टी ऑन व्हील्स जो है, Right. वो हम लोग डिलीवर करते हैं अलग अलग स्टेट्स में, मतलब ऑल ओवर इंडिया। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से यूजुअली क्या प्रैक्टिस होती है? बिकॉज कुछ मेरे भी क्लाइंट्स हैं, तो उनका क्या होता है कि जो टर्म्स होती हैं वो तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करते। पेमेंट्स आती हैं उनसे, बट वो आएंगे 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, तब तक और उतना काम हो जाता है। साल दैट बाद। इज द नॉर्मल प्रैक्टिस विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो आप लोगों का भी ऐसा ही है? सर ये हमारा पेमेंट्स भी है, प्लस बैंक गारंटीज जो हम सबमिट करते हैं ना, वो भी एक एक दो दो साल बाद, मतलब बहुत कोशिशों के बाद मिलती है, और वो भी हेल्ड रहती है काफी टाइम तक। राइट राइट राइट। तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ थोड़ा ज्यादा है, इवन 4-4 साल हम लोगों को हो गए हैं, हमारी पेमेंट्स नहीं आई है। ओके, 4 साल हो गए हैं आपको? जी तो सर मतलब बिल्कुल 4 इयर्स हो गए हैं कुछ पेमेंट्स को तो, और कुछ पेमेंट्स को 2 साल हो गए हैं, 1 साल हो गया है, ऐसा भी हो गया है। आई होप आपको लॉ ऑफ लिमिटेशन के बारे में पता होगा। नो सर, प्लीज एक्सप्लेन सर। Exactly. कुछ पेमेंट्स होती हैं जिसमें जो अगर 3 साल से ऊपर हो गया जिसमें, सो दोज पेमेंट्स यू कैन नॉट रिकवर लीगली। ओके। हाँ, तो इसीलिए आपका केस देखना पड़ेगा। आप अपना लेजर भेज दीजिएगा विद द सेपरेट डिपार्टमेंट्स विच यू हैव डेल्ट विद। तो उसमें श्योर जो सर। भी कैन पेमेंट्स यू हैं जो हम डील कर रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, और पेमेंट्स आ रही हैं और कुछ इनवॉइसेस की पेमेंट्स रह गई हैं, तो उसमें क्या करा जा सकता है, क्या नहीं करा जा सकता, वील हैव टू सिट, वील हैव टू डिस्कस ऑन दैट। सर आप प्लीज अपनी मेल आईडीज बता देंगे, मैं जिस पर आपको आप लेजर शेयर आप कर सकूं। उद्यमिता हेल्पलाइन को लिख दीजिएगा। दे विल प्रोवाइड दे विल गिव यू द फीडबैक फॉर्म, they will give you the email id also. So if you have any queries which I am not able to answer right away because of paucity of time, तो आप वो query आप email पे लिख सकते हैं, and they will get in touch with me and I will provide a legal solution to that. Okay, thank you so much sir. Okay. Himani ji will get my team member to get connected with you, and we'll share the details of Bhuvan ji and put you directly to him. So you can have one-on-one directly there. Sure ma'am, sure. Thank you so much ma'am. Thank you. Thank you. Who do we have next? Mr. Manpreet or Mr. Ajay? Would you like to ask, please? Manpreet ji, would you like to ask your question? Mayank ji, आप पूछ चुके हैं ना? हाँ. Manpreet ji, please ask your question. Ajay ji, would you like to ask your question? Or we can go to Mr. Pradeep Gupta ji, would you like to ask your question? You've been writing in the chat section. Please unmute Ajay ji, Manpreet ji, or Pradeep Gupta ji, any one of them who can just start asking their question. Unmute yourself, guys. Yes, Mr. Srivastava, would you like to ask your question? Good evening. Ajay ji, please ask your question. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भुवन जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने हमारी अभी 2 महीने पहले रिकवरी कराई थी 2 करोड़ रुपए की, और हमारे पेमेंट स्टक हो चुकी थी, हम काफ़ी परेशान थे। तो हम इनको अप्रोच किया तो इन्होंने हमें काफ़ी हेल्प की, और वेरी वेरी थैंक्स टू उद्योक्ता टीम जी। एक सेकंड मुकेश जी, आप एक मिनट म्यूट कीजिए, अजय जी बात कर रहे हैं। हेलो अजय जी बताइए। अजय जी, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक, थैंक यू सो मच।
हमारी ये क्वेरी है कि भुवन जी आप बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारी एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है जिसमें हमने अभी गुड्स तो सप्लाई कर दिया, पार्टी ने हमें रिसीविंग भी दे दी है और हमने इनवाइस अभी पीआई रेस किया है उसमें, लेकिन अभी कोई पीओ नहीं है हमारे पास और ना ही कोई अभी कोई एग्रीमेंट है हमारे पास। हम उनको सामान देते जाते थे, हमें पेमेंट दे देते थे, लेकिन अभी पिछले 6 महीने से कोई पेमेंट नहीं आ रही है। अभी मोर देन 1 CR हमारा पेमेंट स्टक हो गया है। तो आप गाइड कीजिए कि अब कैसे हम रिकवर कर सकते हैं इसमें। ओके पहले तो अजय जी थैंक यू फॉर द पॉजिटिव फीडबैक। हम लोगों ने ऑलरेडी आपके साथ आई हैव असिस्टेड यू और आपकी पेमेंट्स भी आई हैं। तो जो ये आपका क्वेश्चन है कि आपका जो पीओ नहीं रेज किया है बायर ने और आप पेमेंट्स रिसीव हो रही हैं, आप गुड सप्लाई कर रहे हैं और पेमेंट्स आ रही हैं, तो आपका एक पिछले भी लेजर 6 होगा। मंथ से नहीं आई है, अभी पिछले 6 महीने से आ रही है। ओके, लास्ट 6 मंथ से नहीं आई है। हाँ, करीब 1 CR अभी हमारी पेमेंट स्टक हो चुकी है। ओके ओके, तो अगर 1 CR से ऊपर है, जैसे मैंने आपको बताया अभी वेबिनार में, तो हम एनसीएलटी को अप्रोच कर सकते हैं। और अगर हमारी पेमेंट 1 CR से कम है तो हम दूसरे कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं। और अगर हमारी कोई एक्सेप्टेंस है बायर से कि हाँ इतनी पेमेंट्स ड्यू हैं और वो अभी बिकॉज ऑफ सम कंडीशन ही इज नॉट एबल टू मेक, तब हम एक और कोर्ट ऑफ लॉ है विच इज समरी सूट, तब हम उस स्टेज पे जा सकते हैं। तो इन एनी केस पेमेंट्स आपकी रिकवर हो जाएंगी, बट ये देखना पड़ेगा एक बार डॉक्यूमेंट से कि क्या स्टेज पे है। श्योर, तो मैं डॉक्यूमेंट आपकी टीम को एक बार शेयर कर दूंगा, आप गो थ्रू करके फिर हमें इंटीमेट कर दीजिएगा, तो उस हिसाब से फिर मैं आगे करूंगा। वंस अगेन थैंक यू टू यू एंड योर टीम फॉर हेल्पिंग मी। ओके, थैंक यू। Thank you, Ajay ji. Thank you so much. Now, can we have Mukesh ji? Yes, please ask your question, Mukesh ji. गुड इवनिंग मैम। भुवन सर गुड इवनिंग। इवनिंग भुवन सर, हमारे 2 इश्यूज हैं। फर्स्ट इशू है कि प्राइवेट सेक्टर में मैं कुछ सप्लाई करता हूँ मटेरियल किसी क्लाइंट के साथ, तो क्लाइंट मुझे परचेज ऑर्डर भी दे रहा है, एक्सेप्टेंस भी है, एविडेंस सारे हैं हमारे पास, ठीक है। तो एक पेमेंट भी उसने कुछ कर रखे हैं, बट वो 1 साल के बाद पेमेंट टर्म्स के अकॉर्डिंग वो प्लेस भी चेंज कर दे रहा है, सब कुछ मैंने कोड सूट फाइल भी किया और वहां पर वो एड्रेस ट्रेस नहीं हो रहा है। इसके रिगार्डिंग क्या करेंगे सर? सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। आपने केस ऑलरेडी फाइल कर दिया है बट उसने अपना ऑफिस चेंज कर दिया है। जो परचेज ऑर्डर में एड्रेस है वो परचेज ऑर्डर का एड्रेस वहां पर कहीं भी फाइंड आउट नहीं हो रहा है, नोटिस सर्व नहीं हो रहा है। ओके, तो देखिए लॉ में अगर कोई पार्टी के ऊपर नोटिस सर्व नहीं होता तो लॉ में एक ये भी प्रोविजन होता है कि आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकालिए और उसको जब वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकलेगा वो कोर्ट ही कराएगा, आपको डायरेक्शन देगा। तो जब वो न्यूज़पेपर में निकलेगा तो इट विल बी डीम्ड दैट इट हैज बीन डिलीवर्ड ऑन दैट पार्टी, और वो अगर पार्टी तब भी नहीं आती तो आपका केस एक्स पार्टी प्रोसीड हो जाएगा। उस केस में बिना उस पार्टी को सुने जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे रिकॉर्ड कोर्ट के पास अवेलेबल, जो आपने जमा कराया कोर्ट के पास, और जो आपकी सबमिशंस होगी, उस बेसिस पे कोर्ट प्रोसीड करके आपके फेवर में अवार्ड या ऑर्डर पास कर देगा। सेकेंड इशू जो है कि गवर्नमेंट सेक्टर में मैंने कुछ सप्लाई किया, पेमेंट टर्म्स हमारा 6 मंथ या 3 मंथ जो भी टर्म्स कंडीशन है, राइट, और एक्सेप्टेंस एविडेंस सब कुछ है हमारे पास, बट वो डिले पर डिले होते जा रहा है, 1 साल 2 साल। इसके रिगार्डिंग क्या करेंगे? आप उनसे आप उनसे एक्नॉलेजमेंट लेते रहिए, कॉरेस्पॉन्डेंसेस करते रहिए, क्रिएट करते रहिए ईमेल पे कि इतना डिले हो गया, अभी तक पेमेंट नहीं आया। लेट देम गिव वन रीजन और द अदर, एंड वंस यू डिसाइड टू प्रोसीड अगेंस्ट देम लीगली, देन यू विल हैव ऑल दैट कॉरेस्पॉन्डेंस एज अ मटेरियल टू प्रोसीड अगेंस्ट देम एंड एज एन एक्नॉलेजमेंट, जिसपे वो डिनाई नहीं कर पाएंगे लेटर स्टेज पे। बट सर ईमेल पर वन साइडेड सिर्फ ईमेल जा रहा हमारी साइड से, उनकी वन साइडेड नहीं, उनकी तरफ से भी कुछ आना चाहिए। उनके साइड से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। तो व्हाट्सएप पे आप ट्राई करिए। व्हाट्सएप पे सर गवर्नमेंट सेक्टर है, वो लोग ना व्हाट्सएप करते हैं ना फोन कॉल पे, कुछ लैंडलाइन पर बात करते हैं सिर्फ। ओके, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा फिर एक टाइम पे आके कि आपने इतना मटेरियल सप्लाई किया और अभी तक पेमेंट नहीं आया, तो वेदर यू वांट टू रिकवर योर ड्यूज और नॉट। क्योंकि इस केस में क्या होता है, मैंने आपको बताया था पहले भी, अगर आपने
एक पार्टी है जिसपे आप से आपका बिजनेस 30-40% डिपेंडेंट है, आपकी एक मेजर पार्टी है, और हर बिजनेस में ऐसा होता है 20-30% 40% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम वन मेजर पार्टी। और अगर उसमें डिफॉल्ट हो रहे हैं और पार्टी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, पेमेंट्स नहीं दे रही है, एंड इफ वी डिसाइड टू गो अगेंस्ट देम लीगली टू रिकवर आवर ड्यूज, तो हमारा वो 20-30% बिजनेस सीधा स्टक हो जाएगा, क्योंकि वो पार्टी तो चली गई, फिर तो वो आगे बिजनेस देगी नहीं। तो ये आपको बिजनेस कॉल लेनी है, ये आपका कमर्शियल डिसीजन होगा कि अगर आपको उस पार्टी के अगेंस्ट रिकवर करने हैं पैसे, तो पैसे तो रिकवर हो जाएंगे विद इन नो मंथ्स, विद इन मे बी 2 months 6 months और 9 months, पैसे तो हो जाएंगे आपके रिकवर, बट फ्यूचर बिजनेस नहीं होगा आपका उस पार्टी से। सो दैट बिजनेस और कमर्शियल कॉल यू हैव टू टेक। ओके सर, लास्ट एक इश्यूज है। लेटेस्ट हमारा चेन्नई में एक हमारे क्लाइंट हैं जिनसे मैंने डील किया था आज से 4 साल पहले। उनके पास हमारा आउटस्टैंडिंग है 10 से 12 लाख रुपए, बट उन्होंने क्या किया, प्रीवियस कंपनी को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया है। ठीक है, जिसका कोई एविडेंस नहीं, सब कुछ होने के बाद भी वहां से उन्होंने एड्रेस चेंज कर दिया। अब जाकर मुझे पता चल रहा है कि वही पार्टी एक न्यू कंपनी उन्होंने क्रिएट कर लिया है, और उसके थ्रू वो पुराना मटेरियल जब मेरे पास भेजा रिपेयर पर्पज से, तब मैंने सीरियल नंबर से ट्रेस किया कि ये तो वही पार्टी है। अब उनको जब मैंने मेल पर सेंड किया डिटेल, तब वो कह रहे हैं कि वो कंपनी से हमारा कोई लेना देना नहीं, मैं पार्टनरशिप में था और वो कंपनी है नहीं। अब इसके रिगार्डिंग क्या करेंगे? आपको ये देखना पड़ेगा कि जो कंपनी बंद हुई है, क्या वो लीगली बंद हुई थी, उसकी डिटेल्स आपको आरओसी पे मिल जाएंगी। अगर वो कंपनी बंद नहीं हुई है और इन्होंने अपनी बुक्स में ही दिखा दिया कि वो कंपनी बंद है, तो आप उस कंपनी के अगेंस्ट जो डायरेक्टर्स हैं, एटलीस्ट जो ये डायरेक्टर हैं जो अभी कह रहे थे कि मैं पार्टनरशिप में था, इनके अगेंस्ट आप उस कंपनी के नाम में रेफर करते हुए इनके अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते हैं। बिकॉज कंपनी अगर लीगली बंद हुई है तो वो अपने सारे क्रेडिटर्स को भी इंटीमेट करेगी। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी बंद हो जाए और किसी को इंटीमेट ना करे। ऐसे तो फिर सारे बिजनेस, आज मैं एक कंपनी बनाऊं, लोन ले लूं बैंक से, बंद करके कल दूसरी कंपनी बनाऊं, फिर उससे लोन ले लूं, तो ये तो इलीगल है। अगर सर ये कंपनी पार्टनरशिप में है, फिर क्या करेंगे सर? नहीं, पार्टनरशिप में भी आप एटलीस्ट पार्टीज को तो बताओगे ना आप कि यू आर प्रपोजिंग फॉर लिक्विडेशन और यू आर क्लोजिंग द बिजनेस। तो जो क्रेडिटर्स हैं, जो भी पार्टीज हैं, उनको क्या पैसे आप दे रहे हो, नहीं दे रहे, तो रिकवर तो आप कर ही सकते हो उनके अगेंस्ट। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, Thank you, Mukesh ji. Okay, who do we have next? Manpreet ji, would you like to ask your question now? Or we can have Mr. Gaurav Goyal. Unmute Manpreet ji. Manpreet ji, please ask your question. Yes, Pradeep Gupta ji, please ask your question. Pradeep Gupta, मैडम ji, please ask your question. ऑडिबल? बहुत लो आ रहा है आपका आवाज, but we can try. Well, there are no. My thing is showing my speakers are on full volume. So, can you help me in that? Okay, sir, let's try. आप बोलिए, थोड़ा बहुत तो समझ आ ही रहा है. Let me see if Bhuvan ji can make it. Okay. Good evening. Good evening. We are a testing laboratory and we are into service industry. Now, my query is that in our business, what is happening that though we don't have purchase orders, but we have the invoices given to the parties and ledger reconciliation, they have pointed out that these many bills are not in their books. So we send them a copy of those bills. So how can we proceed with them? And partly payments have also come. Suppose there were 10 bills, they have made payment for 4 or 5 bills. Rest, they have either not entered into their books or they have not paid.
So how can we proceed in this case? Okay. So as you have said, one thing which you have done very rightly is reconciliation of the accounts between both the parties. So even in the absence of purchase order, there are invoices and there is a reconciliation of accounts between both the parties, wherein the other party has itself acknowledged that, okay, some bills I have not received from you, kindly send those bills. For the remaining bills, I have already made payment. So that itself is an acceptance of the total amount outstanding which is claimed by you. So you can go to the court and claim your outstanding amount from the party. By court, you mean MSME? CFC, yes. If you are a registered MSME, you Yes, can go. we are. Yes, you can file a reference to MSCFC and they will help you in recover your dues from that buyer. Okay. Sir, thank you. And I one more thing I want to know. That okay, I'll mention URN number on my invoices, payment terms, and interest. Now, interest should be 24%, or as can I write it as per prevailing law? Yes, you can write 18%, 24%, whatever you want to write. Because if they accept your invoice, they cannot, at a later stage go to the court and say that, we were never informed that interest was anywhere agreed between the parties. And once I also mentioned the URN number, which was lacking on my invoice. Yes. So that is a good thing, sir, which you have already done. Okay. I have a lot of more questions, but that I'll ask you later on. You can put across in the chat box. I will try to answer as many questions. I don't think anyone is looking at the chat box. No, because people are looking also. Okay, thank you. Thank you. Is there anyone left? Hello. Yes, we have Sarika. Okay, we have Soham Singh ji. Please ask your question. Hello, sir. Am I audible? Yes. Tell me. If you can be a little louder, please. Hello. Sir. Yes, Mr. Singh, if you can be a little louder. I can hear you. Sir, I would like to ask you regarding, sir, like there has been an outstanding debt of around 89 lakhs and all. And sir, we have tried to communicate it with the defaulters past 4 years through mails, WhatsApp and all. And despite the repeated mails and reminders, they have not responded us back, sir. So, sir, now at this juncture, can we file a case against the buyer, sir? So how much time has it been there since you have provided the goods? So it's been more than 4 years, sir. And the transaction which we have done, and even the conversation, like the reminders which we have been sending them and all the WhatsApp mails, we have that also. It's been, so it has been more than 4 years, sir, right now. So, but still there has been no communication. They have not responded us back. So there has been no proper communication between from their end. So at this time, so at this stage, can we file a case against them? Okay. So if there has been no communication or acceptance of dues or any acknowledgement from your party, and it's been more than 3 years, then Limitation Act will come into play. And what does it states? It states that no case can be filed for recovery of dues if the debt has become more than 3 years old and there's no acknowledgement on the part of the buyer. So if there is no acknowledgement for more than 3 years, then even if you approach the court, the first question court will ask, were you sleeping? Why were you not, approaching the court or asking them for payment? So once that 3 years period has gone by, then there is no
the courts or law, they will not be able to help you out. So recovering that amount which has been more than 3 years pending, it is very difficult. Okay, right. Right. Okay. Yes, Ms. Bharti ji, please ask your question. Vidya Bharti ji, please ask your question. Yeah, good evening, everyone. Good evening, sir. We are in construction line dealing with our different PSUs. Sir, there was a circular post-COVID regarding relaxation in LD, liquidated damage. Okay. Is it still valid? There was a circular from MSME that 95% of the LDs shall be waived off by the buyer. Means we are providing services. So client will waive off 95% of the LD. They will pay us. Circular tha MSME mein. Okay. Okay. See, I am right now, I am not having that copy of the circular. What you can do is you can provide me that copy. I can go through that and can let you know whether that circular is still in existence or it has lapsed, and what is the repercussion of that, till what time it was there in existence. Was that circular applicable to PSUs only, or the companies, different companies will also be under? I might not be able to answer that question right away, because the topic of today's webinar was only delayed payment. So Okay. if you have any particular issue outside the today's topic, I'll be happy to help you if you provide me a copy of that circular. Second thing, sir, कि जो भी हमारा एग्रीमेंट होता है रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट इज सो मच वन साइडेड कि हमारे हाथ में कुछ ज्यादा होता नहीं, उसमें बहुत सारे क्लॉजेस उन्होंने पहले से डाला होता है. तो ये जो एमएसएमई को अप्रोच करते हैं, दिस विल बी सुपरसीडिंग दैट क्लॉजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और इट फॉल्स आफ्टर क्लॉजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? It will supersede. देखिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, I will tell you, if I have given you a contract to kill somebody and the law says you cannot kill, you will be behind the bars or you will be jailed, तो आप कहेंगे नहीं कॉन्ट्रैक्ट मेरा सुपरसीड करेगा लॉ के भी ऊपर? नहीं, ऐसा नहीं होगा. So if there is any clause between the parties which is beyond the law, what the law doesn't state, तो वो सुपरसीड नहीं करेगा. Law will in any case supersede any kind of agreement executed between the parties. In that case, I'll contact separately on helpline, Definitely. putting my case in front of. Definitely. Thank you. Thank you so much. Okay, who we have next? Gaurav ji, please ask your question. Yeah, good evening. Good evening. Yeah, actually, we are a government contractor and we are supplying the goods to the government departments through JAM. Okay. And regarding this payment and delivery, they have a clause that the department has to release the CRAC, means consignee receipt, within 10 days from the date of receipt of material, and they have to make the payment within 10 days from the date of issue of CRAC. But no department is obeying this clause. Actually, I have supplied the material to the army, and they are saying that the payment is to be made by their PCDA, and they have no control over the PCDA, and they are not giving me any time that when the payment will be released. So what to do in that case? Okay, so now there are two options. One, if I have already told you, if it is your major client, then it is a commercial call. You have to decide whether you want to, put them before the court of law to recover your dues, or you still want to continue the business as it is going. Maybe they are making 10% of the payment, 90% is stuck, and again that cycle is going on. So that you have to decide. That's a commercial call. Second is, if you have already made up your mind to proceed against them before the court of law, then yes, definitely we can, because our terms and conditions in terms of the agreement entered between the parties are such which they have not abided by. So we can put them before the court and tell them to make payment of the goods supplied. But they are saying that I have sent them this MSME circulars also,
but they are saying that they will not go through the circulars, that they are not the paying authority. If you have anything to say, then you contact the paying authority, and the paying authority is liable to pay the interest. No, okay. So then we'll have to see, I will have to personally see the agreement and see as to who all are the parties who have entered into the agreement. Payment will come from which entity. So after analyzing all the agreement clauses, I can then maybe, will be in a position to better give you the right advice. Okay. Only after analyzing the agreement and the clauses to it. No, actually, these all go in JAM. All the contracts governed by the JAM, that is the government e-marketplace. Right. So in that, they have given the preference to the MSCs also, and they have mentioned that the payment has to be released to the MSME as per the MSME Act 2006. But no one is obeying that law. No government department is obeying it. I can understand your your pain, because in government departments, usually the payment terms, even if they enter into payment terms, they will never ever give you in terms of what is written in the clauses or what is written in the agreement. There is a lot of delay before the government departments, and you keep on chasing them one after the other, and then keep on resubmitting your bills again and again. Then they will go for verification, and then the payment team will say, we are expecting some funds from the government, it will come in some time. There's a meeting of the body, they will approve your bill, this and that. So many reasons they give. It comes, but say it will come for sure, but when it will come, you will not know. So what is the way to claim interest from the government? It's a very tough question. So to claim the interest, either you fight yourself or put a reference before the MSEFC, because you are an MSME, right? So the interest clause will automatically be triggered once you file a reference to the MSEFC, because section 16 says so. If you file a claim before any other court, then the court will see whether there was in the agreement, there was interest clause which was agreed between the parties or not. Or if there is a delay in other circumstance also, if there is a delay by the government department, then also the Interest Act will come into picture. And usually, even in case of arbitration, the arbitrator along with the principal, it raises the demand for the interest also. So in that case also, you will get the interest part. Okay. Again, thank you. Commercial call, whether or not you want to prosecute them before the court of law. Thank you. Right. Who do we have next? Shweta Pandita, would you like to ask your question, please? Shweta ji, would you like to ask your question? You can unmute. Yes, Vamshi ji, please ask your question. Sagar ji, ask your question. हाँ, आवाज आ रही मैम मेरी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आप पूछिए प्लीज। हाँ मैम, एक्चुअली क्या हुआ है कि बहुत 1.5-2 साल पुराने पेमेंट्स हमारे अटके हुए हैं। 1.5-2 साल के पुराने पेमेंट्स है, MSME के ही है। मटेरियल देके भी 2 साल हुआ है। पेमेंट्स में बहुत डिले। मैंने आपके जो समाधान पोर्टल है उस पर मैंने केसेस किया है, बट उसका कुछ फायदा नहीं हो रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट टीम से अच्छे से। ये जो आपने MSEFC में समाधान में पोर्टल में आपने जो रेफरेंस फाइल की है, उसमें क्या स्टेज पे आपका केस है अभी? नोटिस इशू हो गए, दूसरी पार्टी आ रही है, अपीयर हो रही है या नहीं हो रही है? नहीं सर, दूसरी पार्टी ना वो सपोर्ट ही नहीं कर रही। उनको मैंने अभी एक रिसेंटली मेल डाला है जो मैंने आपको क्वेश्चंस में दिया है। वो हर तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे। वो डायरेक्टली बोल रहे कोर्ट में जाना है तो जाइए आप सीधा इस स्टेज पे से। और MSME में कम से कम जो थाना ऑफिसेस है वो कम से कम 3 से 4 बार आया है। उन्होंने बोला है कि आपके तो बहुत छोटे पेमेंट्स है, ज्यादा बड़े नहीं है।
हमारे पास में 5-5, 6-6 करोड़ के ओल्ड पेन है, हम लोग वो पहले देखेंगे कि आपके 1-2 लाख वाले देखेंगे? सीधा ऐसी बात। ये तो देखिए ये कोई तरीका नहीं हुआ बात करने का कि नहीं सर, पेमेंट तो सही देखिए पेमेंट ही है। किसी का 5 करोड़ है तो जो 500 करोड़ वाली कंपनी है उनके लिए वो 5 करोड़ इज नथिंग। बराबर सर। बट जिसके लिए ड्यूज है, एमएसएमई पोर्टल का नाम ही यही है, माइक्रो। बराबर सर। एमएसएमई शुरू ही माइक्रो से होता है, तो माइक्रो का मतलब ही यही है जिसके 2-4 लाख के ड्यूज होंगे। तो ऐसा नहीं है, उनको ये तो नहीं बोलना चाहिए, बट अगर वो बोल भी रहे हैं तो कोई नहीं, वी कैन टेल देम कि हम उनको बता सकते हैं कि ऐसा आप नहीं बोल सकते और आपको ये केस को आगे टेकअप करना ही पड़ेगा। तो या तो केस क्लोज करके, इसमें रिकंसिलिएशन तो पॉसिबल नहीं है, ऑपोजिट पार्टी आ नहीं रही है, आप इसको आर्बिट्रेशन के लिए रेफर कीजिए। और अगर आप नहीं कर सकते तो केस क्लोज कीजिए, तो हम आगे कहीं और दूसरे कोर्ट पे जाएंगे। हाँ, मैंने वो भी बोला है उनको कि आप नहीं कर सकते तो मैं डायरेक्टली कोर्ट में चले जाओ, तो उन्होंने भी नहीं बोला। जा सकते हैं, आपको उनकी केस क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ऐसी प्री कंडीशन नहीं है कि आपको उनका वेट करना पड़ेगा। नहीं, उन्होंने मुझे ये बोला था कि आप पहले इधर का क्लोज करो फिर आप कोर्ट में जाओ। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लॉ में ऐसा कुछ नहीं लिखा। ठीक है सर, हम लोग फिर डायरेक्टली कोर्ट में जाएंगे। फिर ज्यादा टाइम ऑलरेडी क्या 2 साल तो ऑलमोस्ट हो चुका है सर हम लोग का। वो एमएसईएफसी में एक थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है कि केस आने में, केस लगने में, पार्टी को बुलाने में टाइम काफी लग जाता है। पार्टी को रेफर गए होते तो आपको अभी तक हो सकता है गया, आपकी कुछ पेमेंट्स भी मिल जाती। सर आपके एंड से एमएसएमई से नोटिस गया है उन लोगों को डायरेक्टली, बट उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, ना मुझे किया है ना एमएसएमई को खुद किया है। वो तो इतने बोल्ड है कि वो तो कुछ सुनने के मूड में ही नहीं। उनको उनका काम ही है मार्केट में कम से कम 1 से 2 CR लेके बैठे मार्केट में सब लोगों का, वो लोग तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई नहीं, आप उद्यमिता हेल्पलाइन को अप्रोच कर सकते हैं और ये आपको हेल्प कर देंगे, आपको एक राइट पाथ बताने के लिए कि आप कहाँ अप्रोच कर सकते हो, कौन से कोर्ट के पास। ठीक है सर, मैं हेल्प। सागर जी, आपको हमारी टीम से कोई ना कोई कॉल कर लेगा, नहीं तो आप हमारी ईमेल आईडी या फोन नंबर पे टच कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अभी जैसे प्लेटफॉर्म पे पूरा डिटेल में बात नहीं हो सकता, आपकी हम बात करा देंगे, ठीक है? So, okay, who do we have next? Sunny ji, would you like to ask your question? Anybody who would like to ask your question now? Am I audible? Yes, Sunny ji, good evening. You are. Yeah, thank you. We had an order in September 24 from a buyer wherein we first supplied him by receiving payments. Later, the order increased. We asked the buyer to make advance. They delayed us, but they made the advance. Now they are not picking up the material and they are not allowing us to make the bill. Like the last financial year is past. So even after making many requests and intimating them that we can sell the material at a surplus price, they are not responding. So are we supposed to like raise a register AD towards them through advocate, or how it is? Please advise. No, can you please repeat the question? Even I have mentioned in the question series, like if I'm unable to explain you, we had an order in September 24. Okay. From there, like it started then the later the order increased. So for that we received in advance. Later on, the buyer is not purchasing. Like I don't know if he has lost his order or something, but the amount is good enough. Like it is more than 2 CR. Okay. And we have some 10% of advance. So now they are not responding. Like if we are telling them, like if we sell the material in the market or something like that. So how I have to deal? Like am I supposed to send them an register AD or something like that? So by which mode did they tell you to increase the order? Was it over WhatsApp, email? Yeah, it was by email. We have a confirmation. By email, by WhatsApp. Okay. By verbal communication. As already answered in one of the previous questions asked by some of the participants, that you have the best option to approach the court seeking specific performance of the contract.
The contract is already there by way of an email that you now produce or sell me this much quantity, which they are not lifting now, despite your reminders. So you can approach the court for specific performance of the contract, and court will give direction to that party to lift the material and pay the balance amount or whatever amount is due. And in case any amount is due with respect to the old contract, which is in writing, then you can approach a different set of court, or maybe we have to see the documents basically. So once we will analyze the document, we'll be able to help you to get you in a position as to which court will be best suited for you, whether it will be a specific performance email or ID. Yes. So email ID is already provided in the chat box. You can contact with UDYAMITA Helpline. Okay. And send all your documents. To go to the court for the specific, what is it? Specific performance of the contract. So if there is a contract between the parties, and suppose they have given you an advance and you are not producing the material, then what is the option with the other party? They can approach the court. They can say that this was the contract. I have already given the advance. This party is not making the material. I am suffering on that part. So court will give directions to the party to make the material and sell it, because there is already a contract between the parties, and the rate is also fixed. Everything is fixed. So vice versa is your case. Okay. Right? Vice versa is my case, as in? You have already manufactured the product. The party is not lifting the material. Yeah, right. Party is not lifting the material. Yes. So you can approach the court. You can say that in terms of our this email, I have manufactured the contract. I have manufactured the goods at such a price, and they are not lifting up. They have already given me the advance also. That is also in your favor. Right. So you give the direction for specific performance of the contract. To lift So the material, to give my money back. done, like for this, like unless and until the like the judiciary thing is done, it would be difficult for me to like get my money. Right. See, they will not respond, as you are saying that they are not responding to your calls, not messages. I guess it's mostly a government tender only. I think they must have failed to supply in time or something like that. So that is what you are assuming. Right. But either you take the loss for whatever goods you have already produced, or maybe part of it. Right. Either you bear the loss, or you go to the court for execution of that contract. Yeah. Get your money recovered. Point like I have to go for the execution, most of it. Right. Thank you. I just need the email IDs. I'll connect with you. It's provided, and they will also connect with you. Right. Thank you. Okay. Thank you, Taniji. Thank you so much. Yes, Sarika ji, would you like to ask your question? Yeah, good evening, ma'am. I'm calling on behalf of Sarika. Now she is not there now. She has left. अभी अपना एक केस चालू है पेमेंट के लिए. अभी उनका वारंट भी निकाला उन्होंने कोर्ट ने, बट दैट फेलो इज absconding. So इधर उधर he is hiding, and the local police is not doing anything where he stays. He has changed his jurisdiction. Okay. तो क्या करना पड़ेगा सर इसके लिए? Like that case is about, what is the case all about? Yeah, payment. 100% payment to be received. So we it is a check bounce case. Okay. So we had lodged a case, and the case is on, and they have issued a warrant also on him. But that fellow is absconding from the place. He from where his residence address is not there now. Okay. Yeah. So you have filed a check bounce case only. You did not file a recovery suit. Recovery also is there in that. 2 cases have been filed. Yeah. Okay. So do you know about the whereabouts of that property of the person? He actually living at that place. Whether that place is under his name, or any business or anything under his name. No, there is a business here. He has renamed his business, and we are not finding on what name he is doing the business. He's actually a railway contractor. And even in railway, on which name he is doing, nobody knows. And a lot many people filed a case on him, and he's absconding. What kind of warrants have been issued by the court in your case? Is it bailable or non-bailable? Non-bailable. Non-bailable. Yeah. Okay.
I think just give some details about your case over the email. Okay, sir. And I will try to see what best thing can be done. Because Okay, if he is an absconder, the court will declare him as a proclaimed offender, right? Okay. PO. Hmm. So, and then court might be closing the case thereafter, because if it's a criminal case and person is not there, Yes. then court cannot do anything. Court can only do or prosecute him once the person is appearing before the court. Okay. Okay. If he is declared as PO, then court might as well close the case. Okay. And one more case is there. Case means there is a payment of nearly 1 lakh. It's been delayed since 2 years now. Okay. Lot many times we have. It is a private company. Lot many times we have sent a reminder. Once or twice, my people also have gone there, but the owner is no time available there, and the staff says that नहीं वो मालिक ही देखते हैं, वो मालिक then हमको मालूम नहीं पड़ता कि वो कब रहेगा करके, तो क्या कर सकते हैं सर? But you have not initiated any legal action against them. No, not yet. Okay, then you have to, because there is no other alternate. See, at the end of the day, he will only give excuses one or the other. Correct. And once that 3-year time period will lapse, 2 years have already lapsed. Correct. Once though that 3-year time period will lapse, you will not be able to recover your dues. Okay. So 1 lakh for you may be a small amount or maybe a big amount. I don't know what Yeah. kind of company are you. But if it's a big amount and it matters a lot, then definitely you have to, approach a lawyer and take the legal help to recover your money. Okay. And I've heard that he's like a politician. Like. Even if he's a politician. No matter. I mean, see, 1 lakh amount, if he is not paying, it's not that big amount that he should be called as a politician or something like that. If he is taking amount for crores and crores rupees, then saying that reason that he is a politician, we can still digest. वो जो अपनी जीएलसी है उसको भी सेटिंग करवाया। Okay, sir. तो बताया 14। Okay. Against him. तो वो सारी कलाकारी भी उन लोग के पास में है। Hello. यूपी कैंफर एंड लाइट जब बिक गई बोलानी के पास, तो पुराने आदमियों को बाहर निकाल दिया। पुराने आदमियों जिन ये मेंथा का काम करते थे। Somebody else who has already raised the hand. मेंथोल और वो सब बनाते हैं क्रिस्टल। हाँ। किसी का स्पीकर ऑन है and we can hear you guys speaking. So please can you mute yourself, please? You can mute them and maybe unmute somebody who has already raised the hand. I'm just checking if anybody is left. Anybody who's left to ask question, please. This is the time you can ask now. We can just take another few questions and then wrap it up. Correct. Others can send their questions in the chat box or email them, so that as and when we can just try to answer as many questions as we have over the email. Oh, sure. Yes, Jigar ji, please ask your question. Can you unmute Mr. Jigar? Yes. Audible? Your voice is in echo. Just check where you are sitting. Otherwise, we can hear you. Very good evening. Please ask your question. Yes, good evening. मैम मैंने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल किया हुआ है और उसका कंसिलेशन का प्रोसेस भी हो गया है और आर्बिट्रेशन के लिए मैंने क्लेम स्टेटमेंट सबमिट किया हुआ है, लेकिन जो सामने वाली पार्टी है वो आ नहीं रही है। उनके वहां पे भी हम गए थे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ही वहां से गेट से ही हमें मना कर देते मिलने के लिए, और अभी तक आर्बिट्रेशन की कोई हियरिंग नहीं हुई है हमारी। सामने वाली पार्टी एक दूसरे कंपनी के नाम से बिजनेस कर रही है, जिस कंपनी में हमें बिजनेस किया था वो उसने बंद कर दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं अभी? देखिए, आपने बताया कि आपका ऑलरेडी कंसिलिएशन हो गया है, राइट? और अभी मैटर जो है वो आर्बिट्रेटर के पास आर्बिट्रेशंस
स्टार्ट हो गई हैं जिसमें आपने प्लेंट फाइल कर दिया, ऑपोजिट पार्टी नहीं आ रही सर है। आर्बिट्रेशन का जो मेरा क्लेम स्टेटमेंट मैंने फाइल किया वो आपने करीबन कर 1.5 साल पहले किया है, लेकिन अभी तक कोई हियरिंग वगैरह कुछ हुआ नहीं है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम आर्बिट्रेटर के पास एक एप्लीकेशन डाल के उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि दूसरी पार्टी नहीं आ रही है तो आप हमारे केस को एक्स पार्टी प्रोसीड कीजिए। इन दैट लेकिन सर केस वो मैंने इन फिजिकल वहाँ पे ये गांधीनगर हमारा जुरिस्डिक्शन पड़ता है गुजरात में, तो गांधीनगर जाके हमने बहुत बार ये रिक्वेस्ट किया है कि इसका हमारा हियरिंग का प्रोसेस स्टार्ट कीजिए, लेकिन वो लोग कर नहीं रहे। तो आप आगे जो उनकी हायर अथॉरिटीज है आप उनको एप्लीकेशन लिखिए, क्योंकि क्या होता है वो कि कैसे कैसे करना आप है सर? ऑनलाइन मेल करना है मुझे? आप मेल कीजिए, आप रजिस्टर्ड एडी से भी भिजवाइए कि डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट हमारा मैटर टेकअप नहीं कर रहे हैं और ऑपोजिट पार्टी आ नहीं रही है और ये एक्स पार्टी प्रोसीड नहीं कर रहे हैं, तो आप इनको ओके डायरेक्शन दीजिए कि एक्स तो पार्टी सर प्रोसीड करें। ओके, क्योंकि तो अभी उसके मेरे बाद पास कल ही एक मैटर आया था जिसमें आर्बिट्रेटर ने कंसिलिएशन हुआ, कंसिलिएशन फेल हो गया, उसके ओके बाद प्लेंट फाइल किया कंपनी ने और ऑपोजिट पार्टी नहीं आई, राइट, ओके और ओके उन्होंने एक्स पार्टी प्रोसीड किया और अब उनके फेवर में अवार्ड आ गया, तो नाउ दे तो वांट टू सर एग्जीक्यूट दैट अवार्ड। हाँ, तो मुझे कोर्ट में वो एग्जीक्यूट करना रहेगा? हाँ हाँ हाँ, तो आपको अभी उनकी जो हायर अथॉरिटीज है आप उनके पास जाइए, आप डीसी से मिलिए जो वहाँ पे कमिश्नर होते हैं, तो ओके उनसे यस मिलिए, सर। आप उनसे बात करिए। अगर वो टाइम नहीं दे पा रहे तो आप उन्हें ईमेल करिए या चिट्ठी लिखिए रजिस्टर्ड एडी पोस्ट से, तो वो जब आप वो सब करेंगे तो आगे वो अपने आप आपका केस टेकअप करेंगे। ओके सर, एक और क्वेश्चन है। हम्म सर एक मेरी पार्टी है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ओके उसके साथ अभी आज भी मैं रेगुलर बिजनेस करता हूँ, ओके और वो प्राइवेट लिमिटेड करीबन 2020 में वो टेक ओवर हुई थी, हम्म और पहले जो डायरेक्टर थे उनके साथ भी हम बिजनेस करते थे। हम्म तो पहले के डायरेक्टर के कुछ अमाउंट 4-5 लाख की हमारी लेनी बाकी है, तो ओके वो दे नहीं रहे। और अभी जो 2020 के बाद टेक ओवर के बाद जो हम्म भी ट्रांजेक्शन हुए वो सभी का बिल टू बिल उन लोगों ने पेमेंट दे दिया है। हम्म तो अभी तक क्या होता था सर, वो ऐसा बोल रहे थे अभी टेक ओवर हुई है कंपनी, तो हम पुराने जो डायरेक्टर प्रोमोटर्स है उनके साथ बात करके हमारी डील ऐसी हुई है कि पुराना जो ड्यूज है वो कंपनी में से ही देना है, लेकिन वो देंगे उनका जो पुराना डेटर्स जो आने बाकी है वो आएंगे तब देंगे। लेकिन अभी जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर और डायरेक्टर जो है वो अभी कोई आंसर नहीं कर रहे हमें पुराने ड्यूज के लिए जो टेक ओवर के पहले था। ओके, तो जब अभी टेक ओवर, देखो क्या होता है जब टेक ओवर होता है तो जो भी लाइबिलिटीज और एसेट्स होती हैं वो हम्म, एक एग्रीमेंट में लिखा जाता है कि ये हाँ लाइबिलिटीज और एसेट्स के यस साथ हम टेक ओवर कर रहे हैं एंड हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज पेमेंट्स। यस, लेकिन सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि ये पेमेंट 17-18 का है, हम्म आज हम 2025 में मैं वो क्लेम करूंगा तो वो मेरा क्लेम वैलिड रहेगा? कितना वैलिड रहेगा? क्योंकि आज मैं 7-8 साल के बाद अगर कोई क्लेम करता हूँ पुराना, तो कल जाके लिमिटेशन का कोई वैलिडेशन आएगा, उसमें लिमिटेशन चैलेंज आएगा मुझे? लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा, बट इस एक केस में नहीं होगा। अगर आपने लेजर दे रखा है और पुरानी पेमेंट्स चल रही हैं और वो एडहॉक पेमेंट्स करे जा रहे हैं आपको, उसके बाद सर हमारी हर साल एवरी मंथ बिलिंग रहती है, बिल टू बिल पेमेंट आ रहा है। बिल टू बिल आ रहा है, बट क्या आपके लेजर में वो पुराने इनवॉइसेस आ रहे हैं और उसका भी आउटस्टैंडिंग आ रहा है? यस यस, आ रहा है, आ रहा है और 100%। वो एक्नॉलेज करके दे रहे हैं, वो पेमेंट्स भी कर रहे हैं, यस यस, तो वो लिमिटेशन में कवर हो जाएगा। ओके, तो वो अपना एक केस बार, वैलिड रहेगा ना? हाँ फिर भी एक बार देखना पड़ेगा, आपका लेजर स्टेटमेंट आप भेज दीजिए कि क्योंकि आपने जैसे बताया कि एक टाइम पीरियड के बाद वो बिल टू बिल पेमेंट कर रहे हैं, यस तो दे माइट बी कंसिडरिंग दैट पेमेंट एज बियॉन्ड लिमिटेशन, तो इसलिए वो उसका ओके पेमेंट नहीं कर रहे हैं। यस, तो नहीं वो वो आपके लेजर अकाउंट से स्टडी करके ही पता लगेगा। ओके, बस यही है सर, जो प्रमोटर जो चेंज हुआ टेक ओवर के बाद, तो नए प्रमोटर है वो बिल टू बिल पेमेंट कर रहे हैं। उनका एग्रीमेंट ऐसा ही था कि जो पुराना ड्यूज जो है वो अगले प्रमोटर और डायरेक्टर पेड करेंगे। आपने पे तो एक कंपनी को ही बिल रेज किया ना, डायरेक्टर को तो हाँ, किया वो नहीं, कंपनी तो वही है। तो कंपनी विल पे। डायरेक्टर हाँ तो कभी इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो कोई बिल नहीं लेता ना, नहीं आप है, तो कंपनी मेरा को बिल रेज करेंगे। क्वेश्चन ये है, मेरा जो क्लेम वैलिड कितना रहेगा? बस लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से मैं ऐसे में वीक तो नहीं हो जाऊंगा ना? बस मेरा क्वेश्चन यही है। नहीं, वो एक बार एनालिसिस करके देखना पड़ेगा। जब आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे
तो वो स्टडी करके तब पता लगेगा कि वेदर दैट क्लेम इज विद इन द लिमिटेशन या वो एक्सपायर हो गया। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन है, कैन आई आस्क? या प्लीज। ओके। एक और पार्टी है जिसके ऊपर हमने किया हुआ है, वो 2 दिन पहले ही उसकी हियरिंग थी, कंसिलेशन फर्स्ट हियरिंग, लेकिन सामने वाली पार्टी आई नहीं थी और उनका फोन भी बंद है और जो एड्रेस हमारे पास था उस एड्रेस से अभी वो बिजनेस भी नहीं कर रहे, लेकिन टिल डेट वो जीएसटी रिटर्न रेगुलरली फाइल कर रहे हैं, वो हम जीएसटी पोर्टल पे देख सकते हैं। तो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है कि हम जीएसटी पोर्टल के ऊपर इनके अगेंस्ट कोई एक्शन ले या कोई कंप्लेंट रेज करे कि हमने एमएसएमई में ऑलरेडी केस फाइल किया हुआ है, ये हमारा पेमेंट्स नहीं दे रहे, ऐसा कुछ ऑप्शन है अपने पास? नहीं, जीएसटी पोर्टल तो सिर्फ जीएसटी के रिलेटेड ही आपकी कुछ नहीं, सुनेगा। आप तो कहें कि सर ये केस फाइल हो रहा है बट जीएसटी पोर्टल पे ये आ रहे हैं और नहीं, वहां वो पे नहीं आ रहे हैं, तो वो जीएसटी वाले, जीएसटी डिपार्टमेंट विल नॉट लिसन टू यू। तो अपने सर और क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनका जीएसटी रिटर्न वो रेगुलरली फाइल कर रहे हैं, वो तो बिजनेस कर रहे हैं, उसका मतलब ये है। और तो आप जो उन्हें अप्रोच करिए जहां पे वो बिजनेस कर रहे हैं, आप उस पे उनको ईमेल लिखिए, एक ईमेल आईडी होगा आपके पास, नहीं सर, आप अपने पास पॉलिसी में ईमेल आईडी जाके नहीं है, लिखिए। वो कंपनी नहीं है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है। ओके ओके। हाँ, तो जो पुराना जो बिजनेस था वो बिजनेस पे तो हम काफी बार गए, लेकिन वहां पे वो उन लोगों ने शिफ्ट कर दिया है, जो मोबाइल नंबर थे वो भी उन लोगों ने स्विच ऑफ कर दिए अभी, लेकिन जीएसटी रिटर्न वो रेगुलर फाइल करता है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं और पार्टी कहाँ पे है, क्योंकि अनटिल अनलेस आप उनको ढूंढेंगे तो कोर्ट तो ढूंढेगा नहीं। देखो, कोर्ट तो सीबीआई है नहीं, नहीं कोर्ट तो वो बात, कहेगा कि आप एड्रेस बताइए और हम उनको चिट्ठी भेजेंगे और बुलाएंगे, तो हम वहां दिक्कत पे वही है। एडजुडिकेट इसके अलावा कुछ अपने पास कोई ऑप्शन है जहाँ पे हम कंप्लेन रेज करें और उनका करेंगे। और जीएसटी कोई रिटर्न ऑप्शन, फाइल करना जो है उसके ऊपर इफेक्ट आया, ऐसा कुछ? जीएसटी डिपार्टमेंट में कह सकते हैं कि उन्होंने प्लेस ऑफ बिजनेस अपना चेंज कर लिया है, वो आपको अपडेट नहीं किया, बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन जीएसटी डिपार्टमेंट ओनली। वो हो सकता है उसको कॉग्निजेंस में ले, हो सकता है ना ले, क्योंकि ऐसे तो हर कोई किसी की भी कंप्लेंट कर देगा। हाँ, वो तो सही है। राइट। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। Okay. I think Sonia, we have already answered a lot of questions. So That's correct. अगर कुछ remaining questions हैं, that can be put across over the email or in the chat box, and we can answer them. I would request. Yeah. Yeah, I would request all the participants who still would like to ask some questions or they have some queries to be attended, please write interested in the chat section, or we have already pinned our contact number and email ID. So the best way is you can get in touch with us, or we will let our team member get in touch with you. And as per the availability of Bhuvanji, in a day or so, we'll get you connected. Or we can give you, the email IDs where you can share your documents as per Bhuvanji will recommend. Okay. And I would also like to again request and make an announcement because we're planning to have an offline event with Bhuvanji very soon in Delhi itself. So wherein you can be, face to face, and that session will also be very empowering. So we're just sharing, pin down some forms you can fill in if you are interested, and you can be present. So once we get the response, we will let you know about the place and the timings, obviously, and the day. So it would be weekend only, but it will be in Delhi, that's for sure. So that's one announcement I wanted to make. So whosoever is interested or would like to spread a word also, who's in a need of an expert advice, so you can, do attend that session. Bhuvanji, would you like to conclude with any of the words you like to say? I think I have already, given whatever or educated the participants, and they were quite, informative also. And it was a very good discussion with them, answering their queries and providing them a solution to the best of my knowledge. And I would continue to do so. Whatever questions which have not been answered or they have not been given a chance because of the time,
then they can raise the questions afterwards to us. They can mail it to us, and we'll be happy to help them. Thank you so much. I would like to thank Bhuvanji first for being there and being so patient and answering the maximum of you. He tried to, entertain every question to his ability. So again, I'm requesting you can get in touch with him later also. So, and we will be, of course, having him soon on our platform once again. And so I would like to thank all the participants and our host speaker, Bhuvanji, today from my entire team, UDYAMITA Helpline. Thank you so much for your participation. And I would, Bhuvanji, thank you so much for giving your insights and sharing such valuable information. I'm sure this is going to make a hell lot of a difference in whatever problems we were running through. So thank you, each one of you, and you have a great weekend ahead. Thank you from UDYAMITA Helpline. Thank you. We'll see you back again in another webinar. You can please let us know if you want any other topic to be covered, or we will arrange for another expert on that session wherein you are feeling little insightful. Thank you.